Basically, I have like lots of shirts. Black and white shirts, plain color shirts, shirts with frills, and the stripes ones. Yeah, I think we get it now. Hey guys, welcome to my channel Dress Up Catch-up. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 डिफरेंट तरीके दिखाने वाली हूँ जिसमें आप लोग अपनी शर्ट्स पहन सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले मेरे पास ये ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्ड शर्ट है। तो फर्स्ट wear the shirt normally as you always do, but जो दूसरी साइड की बारी आएगी उसमें आप ऊपर के 2 बटन छोड़ दें या तीसरा या चौथा बटन लगाए, जस्ट लाइक आई हैव डन। ट्राई नॉट टू बटन द होल शर्ट बिकॉज अभी हम इसमें 2 नॉट करने वाले हैं। सो जैसे ही आपकी दोनों नॉट कंप्लीट होती है, ऊपर का जो पार्ट बचा हुआ है उसको आप अंदर नॉट की तरफ फिक्स कर दीजिए, जस्ट लाइक आई हैव डन हियर, एंड एडजस्ट इट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू योर liking. Now this is the look and you can go for some minimal accessory like I am wearing some big loop earrings. Now for the second look I have this plain white oversized shirt. So wear the shirt as you normally do, button down it but not till the end, leave some 3 or 4th button from the end. Now what I have here with me is this bralette. Wear it over your shirt. Wear any type of crop top or bralette over your white shirt. It will just change the whole look. Some might find it really uncomfortable to wear, but as long as you like it, as long as you are comfortable with your whole fit, I think that's all that matters. Pairing with my mini skirt, the whole outfit is complete. Dress it up a little by adding a little bit of details to your outfit. So next look के लिए मेरे पास 2 ओवरसाइज शर्ट है जिससे मैं एक ड्रेस बनाने वाली हूँ, एंड इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक टू डू। सो नॉर्मली जैसे आप शर्ट पहनते हैं, अपना एक हाथ एक शर्ट के अंदर डालिए जिसके साइड बटन हो, एंड रिमेम्बर जब आप अपना दूसरा हाथ डालेंगे दूसरी शर्ट में, उस साइड बटन नहीं होने चाहिए। सो एक साइड बटन एंड दूसरी साइड बटन नहीं, बटन इट डाउन टिल द एंड। Repeat the same thing on the other side as well. Now अब आप देखेंगे कि आपके पास 2 एक्स्ट्रा स्लीव्स हैं। अब आपको पीछे से रिवर्स करते हुए दोनों स्लीव्स को आगे की तरफ लाना है एंड जस्ट एक नॉट बांध देनी है। नॉट बांधने के बाद यू कैन जस्ट ट्विस्ट इट अराउंड, just like I have done here. You can just twist it around. So now you can see the back is fully covered and the dress is complete. You can adjust it according to your comfortableness. So your 2 shirts in 1 dress is complete.